So we move on to the next part of the spinal cord, the ascending tracts. We have already discussed कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ located है वो. The second part are the descending tracts. चुप हो जाओ. Descending tracts are known as motor tracts because they bring about the motor activity in the body part, especially the skeletal muscles. तो सारे descending tracts कहलाते हैं और उसकी हम आगे बात करेंगे. The descending fibers or the motor fibers are again functionally as well as anatomically divided into two distinct portions. One is known as the lateral descending pathway and second is known as the medial descending pathway. Just like sensory ascending system, we have got dorsal column ascending pathway, anterolateral ascending pathway. दो अलग अलग pathway हैं sensory में. इसी तरह motor में भी division है. One type of the fibers are descending into the lateral white column of the spinal cord, while others are descending into the ventral part of the spinal cord. So we have got lateral descending pathway and medial descending pathway or ventral descending pathway. The functional difference is that the lateral descending pathway, which contains two major tracts, the corticospinal tract and the rubrospinal tract or rubrospinal pathway, which can also be called as cortico-rubrospinal pathway because fibers arises from the cortex, relates to the red nucleus, then fiber arises from there and from the rubrospinal tract. Okay? So two lateral descending pathways are there. The functional characteristic of these pathways is that they control voluntary motor activity of the body. They control mainly the voluntary activity concerned with the extremities. ये जो extremities की जो छोटी muscles है, उनकी activity को जो voluntarily हम control कर रहे हैं, वो आपका lateral descending pathway से होता है, corticospinal tract and rubrospinal pathway. Then another one is the medial descending pathway. Fibers are, there are multiple tracts are there. Fibers are descending on the ventral white column of the spinal cord and they are many. And the major function of those tracts is to control the tone, posture and equilibrium of the body. So medial descending pathway, the fibers which are medial descending pathway which carries fibers from one side, they are relayed on both sides of the alpha motor neuron of the spinal cord. So there is a bilateral innervation. That's why it has to control the tone, posture and equilibrium. While the lateral descending pathway has got a unilateral termination mainly and controls the extremity musculature. So there are different medial descending pathways are there. They have got different functions. We will come to them. Vestibulospinal, two types are there. Medial vestibulospinal tract and the lateral vestibulospinal tract. They are mainly excitatory. These neurons or nerve fibers of these tracts are excitatory to alpha motor neuron mainly. This differentiation will come into picture now when we talk of the motor function. The reticulospinal tract, which is again arising from two different levels, from the pons and from the medulla. So we have got pontine reticulospinal tract, we have got medullary reticulospinal tract. The pontine reticulospinal tract is always excitatory. It is excitatory in nature, while the medullary reticulospinal tract is inhibitory in nature. And where do they act? The reticulospinal tract or the fibers are actually or mainly influencing the activity of the gamma motor neurons. Vestibulospinal mainly influencing the activity of the alpha motor neurons, while these tracts influences the activity of the gamma motor neurons. Then we have got tectospinal and oleospinal pathways are there and interstitial spinal pathways are there. इनके बारे में थोड़ी आगे बात करेंगे. So spinal cord के मोटे functions क्या हैं? Okay. Sensory functions we have already seen. Different sensory fibers are coming to the spinal cord
relaying in the different layers, fibers crossing to the opposite side or ascending on the same side, forming the tract and are going or destined to the thalamus. Okay, that is the sensory function. Then motor function is more important, or most important we can say, that because the spinal cord contains the alpha motor neurons which are innervating the skeletal muscles of the body, and as we have seen earlier also, that alpha motor neurons are known as the final common pathway destined to the skeletal muscles of the body for voluntary activity. Then third function is the reflex function. Many reflexes, inborn reflexes, learned reflexes are being coordinated at the level of the spinal cord, both somatic and autonomic. इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. Then various reflexes are integrated. Reflex होती ही नहीं है, integrate भी होती है साथ में कई सारी. Then tone and posture can also be regulated at the level of the spinal cord. हालांकि इससे पूरा नहीं होता. Higher level neurons are required for the regulation of the tone and posture, but the spinal cord do play its own role in the regulation of the tone and posture. And lastly, we have already discussed, it is a center for the modulation of the pain pathway. कौन सा है? Gate control mechanism and descending pain inhibitory system, all are playing at the level of the substantia gelatinosa. For motor control, in case of the autonomic nervous system, we say it is a one neuron pathway. Effector neuron arises from there and supply the smooth muscles of the body or the glands of the body. While for the voluntary motor activity, two neuron pathways there. One is the upper motor neuron, another is the lower motor neuron. The understanding of these neurons, upper and lower, are absolutely essential, because if we want to locate, if we want to find out the type of the lesion, the placement of the lesion or site of the lesion, gravity of the lesion, then we have to know that whether the upper motor neuron is injured or lower motor neuron is injured. And there are differential tests in the neurology to find out all these things. Lesion कहाँ है और किस तरह का है, वो हम इससे पता लगाते हैं ये neurons कहाँ से आ रहे हैं. So upper motor neuron we already defined. Can anybody tell me what is upper motor neuron? नहीं, nothing to do with the thalamus. इस तरह का डेफिनेशन नहीं बताया मैंने, होता भी नहीं है. अपर मोटर न्यूरॉन, upper motor neuron is a neuron which controls the activity of the lower motor neurons. That's all. Any neuron which controls the activity of the lower motor neuron is an upper motor neuron that can be located either in the cerebral cortex or in the basal ganglia or in the vestibular nucleus or in the reticular formation of the brainstem or in the olivary nucleus. Anywhere it can be. But if it is directly affecting or indirectly via interneurons affecting the activity of the alpha motor neurons, then it is an upper motor neuron. Location site is not important. नाम दिया है upper motor neuron, मगर location जरूरी नहीं है कहाँ. कॉर्टेक्स में भी हो सकती है, बेसल गैंग्लिया में हो सकती है, सेरिबेलम में हो सकती है, रेड न्यूक्लियस में हो सकती है, और भी नीचे हो सकती है. But it is influencing the activity of the lower motor neuron, so it is known as the upper motor neuron. Because when upper motor neuron is involved in the disease process, characteristic features are there in the musculoskeletal system of the body. When the lower motor neuron is damaged, the features are entirely different. So we can differentiate, and then the site of lesion can also be differentiated by finding the level of damage or level of deficiency of the function in the body when we examine the patient. So that is upper motor neuron, and then lower motor neuron is the motor neuron which directly innervates the skeletal muscles of the body. Skeletal muscle को जो न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है डायरेक्टली, वो लोअर मोटर न्यूरॉन होगा. वो ब्रेन स्टेम में भी हो सकता है और वो स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है. स्पाइनल कॉर्ड में अगर होगा तो अल्फा मोटर न्यूरॉन होगा डेफिनेटली, और अगर ब्रेन स्टेम में होगा तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई जो मोटर न्यूक्लियाई है, क्रेनियल नर्व होगा मोटर न्यूक्लियाई, सेंसरी न्यूक्लियाई, मिक्स्ड न्यूक्लियाई. तो मोटर क्रेनियल न्यूक्लियाई और मिक्स्ड क्रेनियल न्यूक्लियाई which gives origin to the fibers which supply the facial muscles of the body or the girdle muscles here, they are lower motor neurons. Okay, so that is the definition.
सो स्पाइनल कॉर्ड, देन वी कम टू द रिफ्लेक्स फंक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। अब हम रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, एज यू कैन सी, इज एन इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस। कोई भी हमने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस के प्रकार कई तरह के हो सकते हैं, बट देयर इज अ रेस्पॉन्स, and that is response is involuntary response that usually does not change, okay, except certain reflexes are there which gradually accommodates. So reflex, that is the reflex action. Reflex arc is the pathway involved in the execution of that particular reflex, that is the reflex pathway. The reflex arc consists of at least 5 components are there. किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क होती है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन होगा, रिसेप्टर होगा, इंटीग्रेशन होगा, ये सारे फैक्टर्स आएंगे उसके अंदर। दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। सो 5 कंपोनेंट्स आर देयर इन एनी रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। अ रिसेप्टर हैज टू बी देयर, पहली बात, रिसेप्टर हैज टू बी देयर। द सेकंड इज एफरेंट फाइबर, एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए जिसका एफरेंट फाइबर होता है। सेंट्रल न्यूरॉन वेयर इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस, जरूरी नहीं है ये हो ही, मगर यूजुअली टिपिकल रिफ्लेक्स में होता है ये, कई रिफ्लेक्स में नहीं भी होता, हम आगे देखेंगे ऐसा कैसे होता है ये। देन इफरेंट न्यूरॉन इज देयर एंड इट्स मोटर फाइबर, इट्स फाइबर इज देयर, दैट इज द मोटर नर्व, एंड अल्टीमेटली इफेक्टर एंड ऑर्गन, मोस्टली skeletal muscles are there which are executing the reflex action. These are the different components shows diagrammatically. Sense organ, receptor is there. Electrical activity is the generator potential, which is not an action potential. No, it is generator potential or receptor potential. The afferent nerve, action potential transmission हो रहा है. Central neuron, EPSP और IPSP होगा यहाँ पे, ठीक है. Again, local response is there. Efferent neuron, action potential, it is axon, and the muscle first end plate potential and then the action potential. So these are the components of the reflex arc in the body. Now reflex can be, or nomenclature of the reflex depends upon various factors. So we have got 4 categories of the nomenclature for the different reflexes: asynaptic, monosynaptic, disynaptic, and polysynaptic. Do you know example of any asynaptic reflex? That is very atypical. हमने जो अभी 5 कंपोनेंट बोले थे वो 5 कंपोनेंट होते ही नहीं है उसके अंदर, सिनेप्स ही नहीं होता। ऐसा कोई रिफ्लेक्स पढ़ा है हमने अभी तक? Have we learned any reflex which does not involve multiple neurons? Even 2 neurons are not there. कोई सिनेप्स ही नहीं है उसके अंदर, फिर भी हम उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। पढ़ाया है मैंने, मैं पढ़ाई हुई चीजें पूछता हूं ज्यादातर, सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम्हारा जो पाथवे है रिकलेक्ट करने वाला वो एक्टिव है कि नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ाई थी हमने, एक्सोन रिफ्लेक्स पढ़ी थी, ट्रिपल रिएक्शन पढ़ा था, ट्रिपल रिएक्शन, ट्रिपल रेस्पॉन्स, रेड लाइन, फ्लेयर, व्हील, एक्सोन रिफ्लेक्स, एंटीड्रोमिक कंडक्शन। एनी आइडिया? पढ़ा है भाई, एक्सोन रिफ्लेक्स पढ़ाई है। यहाँ पे एक स्क्रैच करें तो पहले सफेद लाइन पड़ जाती है, थोड़ी देर में लाल हो जाएगा, फिर इसके चारों तरफ ललाई फैल जाएगी और थोड़ी देर बाद में उबार आ जाएगा। ये पढ़ाया था हमने, ये एक्सोन रिफ्लेक्स था। उसमें वही एफरेंट फाइबर है, उसी की ब्रांच वापस नीचे आ जाती है, ऊपर इंफॉर्मेशन गई, मगर इस रिएक्शन के लिए उसकी जरूरत नहीं है हमें, यहीं पे सारा काम हो जाता है। देयर इज अ वासोडाइलेटेशन occurring there. That is asynaptic reflex, or axon reflex is the example of that.
Then monosynaptic reflex is also known as axon reflex. Sorry, stretch reflex. ये सबसे important reflex है body की. Important in the sense that if I am standing erect, it is because of this reflex only. This reflex is monosynaptic, means two neurons are there and one synapse is there. That is monosynaptic reflex. So all stretch reflexes in the body are monosynaptic reflexes. Then we have got bisynaptic reflex. Okay, इसमें दो synapse आती हैं, तीन न्यूरॉन हो गए, इसका मतलब 3 neuron, 2 synapses are there. If I tape this biceps tendon, there is a contraction of the muscle. Okay, this is stretch reflex. But the triceps relaxes simultaneously. So inhibition is going to the interneuron, to the triceps muscle. So 2 synapses are involved. So this reflex is inhibitory. So disynaptic reflexes are mostly inhibitory in nature. Okay, reciprocal innervation is there. यहाँ पे अलग है और इसका उल्टा यहाँ आ रहा है. And then the polysynaptic reflexes. Other reflexes which we learn in detail will be the polysynaptic. Multiple neurons are there. ये कैसे पता लगता है कि कोई रिफ्लेक्स मोनोसिनेप्टिक है, डाइसिनेप्टिक है, पॉलीसिनेप्टिक है? हाउ डू यू नो? किसका टाइम मेजर करें? सही कह रहे हो, टाइम मेजर करना चाहिए. कहाँ का? स्टिमुलस अप्लाई किया, एफरेंट नर्व का कैरेक्टरिस्टिक हम जानते हैं, उसका कंडक्शन वेलोसिटी हम जानते हैं, ठीक है. इफरेंट फाइबर का कंडक्शन वेलोसिटी हम जानते हैं. तो टोटल टाइम में से ये टाइम निकालो, जाने का टाइम, आने का टाइम निकालो, तो सिनेप्स में कितना टाइम लगा वो पता लग जाएगा. अगर 2 सिनेप्स है तो ज्यादा टाइम लगेगा, 3 सिनेप्स है तो ज्यादा टाइम लगेगा. So by finding out the time of the conduction pathway of the reflex arc, we can find out whether the reflex is monosynaptic, disynaptic or polysynaptic in nature. Then functional classification of the reflex is also there. There are flexor reflexes, extensor reflexes, writing reflexes, postural reflexes and withdrawal reflexes. इसमें कॉमन आ गई है कुछ चीजें. फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस आर मोस्टली विड्रॉल रिफ्लेक्सेस. जब कोई भी विड्रॉल फिनोमिना होती है, यहाँ पे गर्म चीज रखी थी, हाथ विड्रॉ हो गया इमीडिएटली, ये विड्रॉल रिफ्लेक्स है. और ये फ्लेक्सर रिफ्लेक्स भी है, क्योंकि फ्लेक्सर से इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है. देन वी हैव गॉट एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस. अब इसका एग्जांपल देते हैं हम कि अगर मैं नंगे पैर चल रहा हूं, पैर में कांटा चुभ गया तो पैर ऊपर आएगा एकदम से, ये विड्रॉल हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है. मगर अगर ये ऊपर आया तो मैं एक टांग पे खड़ा हो गया, अगर ये सपोर्ट नहीं देगा तो मैं गिर जाऊंगा. ये मसल जो है एक्सटेंड होनी चाहिए इमीडिएटली. ओके, so that is the extensor type of the reflexes. Writing reflexes and postural reflexes are same. Writing reflexes are part of the postural reflexes. हम जो posture maintain करते हैं, because we learn later on that the posture is both reflex and voluntary. हम अपनी मर्जी से अपने posture में बदलाव कर सकते हैं और reflexes भी इसके अंदर काम आती हैं. So writing reflexes means correction of the posture. अगर आपका posture किसने disturb कर दिया है तो उसको अगर हम सही कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सेस आपकी राइटिंग रिफ्लेक्सेस कहलाती हैं और वो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस का ही हिस्सा है. सो वी हैव गॉट राइटिंग रिफ्लेक्सेस, पोस्चरल रिफ्लेक्सेस एंड अदर रिफ्लेक्सेस आ गए. एक तरह का नजरिया है रिफ्लेक्सेस को देखने का. द अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द रिफ्लेक्सेस और क्लासिफाइंग इज डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर. उस रिफ्लेक्स के लिए रिसेप्टर कहां मौजूद है उसके बेसिस के ऊपर हमने रिफ्लेक्सेस को क्लासिफाई किया है. सो इफ द रिसेप्टर्स आर सुपरफिशियल, क्यूटेनियस रिसेप्टर्स अगर हैं, स्किन में है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर रिसेप्टर्स हैं, देन दोज रिफ्लेक्सेस आर नोन एज सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस. बॉडी के अपर पार्ट से आ रही है. दीज सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस अराइजेस आइदर फ्रॉम द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू और द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी. दोनों आ गई इसके अंदर, स्किन भी आ गई और म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी आ गई, क्योंकि कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा दे आर म्यूकस मेम्ब्रेन्स. ओरल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन, फेरेंजियल कैविटी जो सामने से दिखती है म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां से भी रिफ्लेक्सेस आती हैं. तो दे आर सुपरफिशियल इन नेचर, वहां आप डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकते हो. दे आर सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस. देन डीप रिफ्लेक्सेस
The receptors are located in the muscles and tendons of the body. Such reflexes are deep reflexes. Most of the reflexes which we call under the deep reflexes, they are all stretch reflexes. They are all stretch reflexes. They are all monosynaptic reflexes. Then visceral receptors or visceral reflexes are those where the receptors are located in the viscera, जो हम कई तरह तो CBS में पढ़ चुके हैं, वो visceral reflexes है बहुत सारी. Then according to the number of the synapses we have already seen, monosynaptic reflex, disynaptic reflex और polysynaptic reflex. अरे क्या व्यापार चल रहा है या लेने देने का है? Then another way of looking at the reflex, unconditioned reflex and conditioned reflex. Unconditioned reflex are inborn, बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं, सीखनी नहीं पड़ती. आपने मुंह में नींबू रखा, पानी आना शुरू हो गया. उसके बाद में आपके सामने नींबू का नाम लिया तो अभी पानी आना शुरू हो गया. नींबू मुंह में नहीं रखा आपने, ठीक है. तो एक तो अनकंडीशन, दूसरा होता है मुंह में आपने खाना रखा और सलाइवेशन हुआ, ठीक है ना, ये कंडीशनड है. अनकंडीशन रिफ्लेक्सेज है, ये मैंने यहां मारा रिफ्लेक्स आ गई, यहां मारा रिफ्लेक्स आ गई, ठीक है. ये आपकी अनकंडीशनड है, बर्थ से ही प्रेजेंट है. बच्चा पैदा होता है, उसके हफ्ते 10 दिन का हुआ है, उसके हाथ में पाम में आप अंगुली दो, फौरन जकड़ लेगा उसको नहीं पता क्या कर रहा है. इट इज अ रिफ्लेक्स, ग्रैस्प रिफ्लेक्स कहते हैं इसे. ये बाई बर्थ होती है. So such reflexes are unconditioned reflexes, okay, while the other are the conditioned reflexes which are always learned responses. इनको लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है. ये कंटिन्यू भी कर सकती हैं और बाद में धीरे धीरे नहीं काम आए तो डिटीरियरेट भी हो जाती हैं और डिसअपियर भी हो सकती है. So this is the diagram of the simple monosynaptic reflex. You can see the stimulus is there, the receptor is there, sensory neuron, dorsal root ganglia, cell body is located here, the central process entering into the spinal cord, directly communicating with the alpha motor neuron at the same level, efferent motor pathway is there, and skeletal muscle is there. So this is the simplest reflex in the body, that is monosynaptic reflex or the stretch reflex. ये डिफरेंस है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो अभी बताई थी, एंड वी हैव गॉट द पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स. मल्टीपल न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड अल्टीमेटली देन मोटर पाथवे इज देयर गोइंग टू द इफेक्टर एंड ऑर्गन. सो दैट इज अ पॉलीसिनेप्टिक टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स. ये ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है, थोड़ा फर्क है इसके अंदर. वी हैव गॉट 2 न्यूरॉन्स इन द पाथवे. वन इज द, ये कौन सा न्यूरॉन कहलाएगा, ये कौन सा, ये 2 न्यूरॉन्स आर देयर. वन इज दिस न्यूरॉन, अनदर दिस न्यूरॉन. इसको क्या कहते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज देयर एंड दिस इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. सो मोस्ट ऑफ द ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस आर पॉलीसिनेप्टिक इन नेचर. एक सिनेप्स यहाँ सेंसरी न्यूरॉन तो यहाँ बन रही है, और भी आ सकते हैं, एंड देन मल्टीपल न्यूरॉन्स आर देयर. सो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स इज द मल्टीसिनेप्टिक एक्सेप्ट दैट इट हैज गॉट अ 2 न्यूरॉन इन इट्स efferent pathway. That's all. So now we come to the reflexes of the spinal cord. The most important reflex is the stretch reflex, और ये सबसे complicated है समझने के लिए. दिखने में बड़ी सिंपल है मगर समझने में थोड़ी complicated है. ये थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको अगर पढ़ना चाहते हो तो. So that stretch reflex is that skeletal muscle when stretched, it responds by contraction. Very simple. Simplest definition, मसल को आप स्ट्रेच करेंगे, ये रेस्पॉन्स करेगी कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा. मैंने मसल पे यहां मारा, स्ट्रेच हुई मसल, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है ना, दैट इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स. द रिसेप्टर्स, अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कैसे काम करती है, एग्जीक्यूट करती है. Receptors for the stretch reflex are located in the skeletal muscle themselves and they are known as muscle spindles.
दे आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिसेप्टर्स इन द एनिमल किंगडम। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिसेप्टर हो ही नहीं सकता कहीं पे भी। मसल स्पिंडल्स, नाउ दीज मसल स्पिंडल्स, अभी डायग्राम आएगा उसका। Within them, because they are largest, they can be dissected out also. Largest receptors are there. They contain within themselves two types of the fibers. स्पिंडल के अंदर दो तरह के फाइबर्स हैं जिनका नाम दिया है हमने न्यूक्लियर बैग फाइबर एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर। ओके, एंड दीज फाइबर्स हैव गॉट टू डिफरेंट सेगमेंट्स। इनका सेंट्रल सेगमेंट अलग है और पेरिफेरल सेगमेंट अलग है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ दीज टू टाइप ऑफ फाइबर्स इज सेंसरी इन नेचर, while the peripheral portion contains the contractile elements। इसलिए इनको फाइबर कह रहे हैं। Those fibers which are contractile lying at the periphery, they are known as intrafusal muscle fibers। The skeletal muscles which contract and we can see the contraction, these fibers are now known as extrafusal muscle fibers। extrafusal है, बाहर है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमें देखते हैं। While these fibers which are present within the muscle spindle in the nuclear bag and nuclear chain fiber, they are known as intrafusal muscle fibers। तो दो तरह का मोटर कंपोनेंट हो गया, extrafusal muscle fibers are there, intrafusal muscle fibers are there। अब क्योंकि दो तरह के मसल फाइबर है तो दोनों तरह का अलग अलग इनर्वेशन भी आएगा उनका। So because this muscle spindle contains sensory part also and motor part also, so it has got a dual innervation also। sensory innervation भी आएगा और motor innervation भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। so sensory innervation comes via two type of the fibers। the nuclear bag fibers, देखें हम आगे, yes, कहाँ गए, ये आपका मसल स्पिंडल है, दिस इज मसल स्पिंडल, यू कैन सी, यहाँ दिखा है इसको बड़ा करके, और ये अंदर ये फाइबर दिख रहे हैं आपको, ये फाइबर, ठीक है। द सेंट्रल पोर्शन इज सेंसरी, द पेरिफेरल पोर्शन इज मोटर इन नेचर। ये कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, ये सेंसरी पोर्शन है, इसका नर्व सप्लाई अलग है, इसका नर्व सप्लाई अलग है। नाउ द नर्व सप्लाई डिफर्स, देयर इज a nuclear bag fiber, there is a nuclear chain fiber, as you can see. Now why they are known as so, you can see diagram here now. This is nuclear bag fiber and this is nuclear chain fiber. Why this is known as nuclear bag? Because the central portion of this type of the fiber is widened, dilated and contains multiple nuclei। एक बैग में जैसे न्यूक्लियस भरे हुए होते हैं वैसे न्यूक्लियस इसमें भरे हुए हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियर बैग फाइबर कहते हैं। while the other one, the nuclei spread over the long distance like a chain, so they are known as nuclear chain fibers। so muscle spindle contains two types of the fibers within itself, nuclear bag and nuclear chain fiber। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, नर्व सप्लाई अलग है, दोनों का फंक्शन भी अलग है, दोनों का फंक्शन भी अलग है। so nuclear bag fiber, the central sensory portion of nuclear bag and nuclear chain fiber both are supplied by the largest diameter fiber in the body, sensory fiber 1A fiber। हमने देखा था क्लासिफिकेशन में सेंसरी फाइबर्स का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 फाइबर्स आर देयर। टाइप 1 में 1A and 1B fibers were there। 1A fiber are supplied the central sensory portion of the muscle spindle of nuclear bag and nuclear chain fibers, ठीक है, दोनों पे आ रहा है। These fibers are also known as dynamic sensory afferent fibers। They are known as dynamic sensory afferent fibers। Why do we say that? Because these fibers sense or monitor continuous change in the length of the muscle fiber। ये मसल फाइबर की लेंथ में अगर खींचते हैं हम तो मसल फाइबर की लेंथ में बदलाव आता है। मसल स्पिंडल उसी के अंदर मौजूद है तो उसकी लेंथ में भी बदलाव आता है। ये लगातार जो बदलाव आ रहा है ये डायनेमिक चेंज है, बदलाव आके खत्म हो गया, ये स्टैटिक चेंज हो गया। so that dynamic change is appreciated continuously by the 1A type of the sensory fibers arising from the central sensory portion of the nuclear bag and the nuclear chain fiber। they are fastest conducting fiber in the body।
अब मैं सेंसरी इनर्वेशन की बात करूं, देन एंड दीज एंडिंग्स आर ऑल्सो गिवन द नेम, यहां लिखा हुआ है एन्यूलो स्पाइरल नर्व एंडिंग्स आर देयर. So 1A type of the fiber in the nuclear bag fiber, they wind around the central sensory portion. यहाँ इसके चारों तरफ घूम गए, बांध लिया इसको. So they are known as annulospiral nerve endings. Okay. Then the nuclear chain fibers are also supplied by a different type of the sensory innervation. ये दूसरे तरह का आ रहा है. Type second sensory fibers, relatively slow conducting fibers they are, and they supply only nuclear chain fibers. Nuclear chain fibers signal static change in the muscle length, while the nuclear bag fibers mainly signal the dynamic continuous change in the length of the muscle. इनकी अहमियत जब पता लगती है आपको कि जब आगे आगे हिरण भाग रहा है और पीछे अगर चीता भाग रहा है, तो जो मसल का कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए, डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, then we appreciate the importance of these two types of the fiber. अगर कहीं भी गड़बड़ हुई तो जान पे बनी आती है. तो दो तरह का सेंसरी इनर्वेशन होगा, एन्युलो स्पाइरल नर्व एंडिंग एंड दी फ्लावर स्प्रे. तो जो टाइप सेकंड सेंसरी एंडिंग्स है, दे आर एंडिंग लाइक दी स्प्रे, टुकड़े होकर के बिखर जाती है जैसे कोई फूल बिखरा हुआ है, फूल बना हुआ है. दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम ऑफ फ्लावर स्प्रे टाइप ऑफ द एंडिंग. तो सेंसरी एंडिंग मसल स्पिंडल में न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में दो तरह की है, annulospiral nerve endings of type 1A fiber and flower spray type endings of the type second fiber, which are relatively slow conducting fiber. Then comes the motor innervation, peripheral portion. ये peripheral portion which contains the contractile element actin and myosin मौजूद है यहाँ पे, और वो contract करेगा. ठीक है. Again, nuclear bag fibers are, as I said, dynamic in nature. They signal dynamic change in the muscle length. So they receive innervation, gamma efferent fibers. Remember, in the spinal cord, two types of the motor neurons were there in the alpha motor neuron and gamma motor neuron. Alpha motor neuron supplies the extrafusal muscle fiber. Gamma motor neuron supplies the intrafusal muscle fiber. So these gamma motor neurons are again of two types, gamma dynamic and gamma static. Gamma dynamic fiber supplies the nuclear bag fibers, while the gamma static supplies the nuclear chain fibers. This differentiation is essential to know because in case of the hemiplegia, if there is a lesion in the internal capsule, अगर वहां bleeding होती है तो muscle becomes hypertensive, इनमें tension बढ़ जाता है. ठीक है. That is because of the hyperactivity of the dynamic gamma motor neurons. In the Parkinson's disease, which is very common, again the muscle becomes tense, उनका tension बढ़ जाता है. But the cause is increased activity of the static gamma motor neuron. तो दोनों अलग अलग कारण है, इसका पता लग रहा है कि दो अलग अलग चीजें होती हैं. Gamma motor neurons are there and alpha motor neurons are there. And fifth one is the supply of the beta efferent fibers. The exact function of these are not known. Okay, but they are coming mainly to the nuclear bag fiber, nuclear chain में नहीं हो रहा. So that is the innervation of the muscle spindle, which is the sensory organ in the body, in the muscle. ये हो गया सारा. Now what is the change? The primary sensory ending on the nuclear bag fibers, they are sensing or responding to rate of change in the skeletal muscle. Okay, while the nuclear chain fibers are responding to the length only. Length दोनों में ही आ रही है, मगर एक में डायनेमिक चेंज आ रहा है लेंथ का और दूसरे में लेंथ बदल चुकी है. अब वो जो सिग्नल जा रहा है वो आपका स्टैटिक लेंथ की चेंज का आ रहा है. मोटर इनर्वेशन इज देयर. ये एक नाम आ रहा है फ्यूजी मोटर न्यूरॉन. जो न्यूरॉन छोटी साइज के होते हैं ना, उनको फ्यूजी मोटर न्यूरॉन कहते हैं. दैट इज द नोमेनक्लेचर. वो क्या
Now, gamma dynamic motor neurons, okay, they modify the sensitivity of the annulospiral nerve endings in the muscle spindle. बात समझ में आ रही है? गामा डायनेमिक मोटर न्यूरॉन्स आर मॉडिफाइंग, मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, सेंसरी मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं मोटर मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। इनपुट मोटर से आ रहा है, इनपुट गामा मोटर न्यूरॉन से आ रहा है, और वो क्या कर रहे हैं? गामा मोटर न्यूरॉन कर रहा है मसल स्पिंडल के जो एनुलोस्पाइरल नर्व एंडिंग से उनके डिस्चार्ज पैटर्न को चेंज कर रहा है, while the gamma static is changing the discharge pattern of the type second afferent fiber. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हम देखते हैं अभी। Why? What is the exact meaning of that? So annulospiral nerve endings, then they respond during both periods. डायनेमिक चेंज में भी जा रहा है और जो चेंज हो चुका है उसके बाद भी रेस्पॉन्स आ रहा है। So annulospiral nerve endings are phasic as well as static changes in signaling, respond to change in the length of the muscle and rate of change in the muscle length. That change is signaled by the dynamic afferent fibers. Flower spray endings on the nuclear chain fibers respond to the static change in the length. अब देखिए रेस्पॉन्स क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ऐसा जरूरी क्यों है आपके लिए। So when we stretch the muscle, देखिए इस मसल को स्ट्रेच करने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका है कि मैं इसको हाथ को मोड़ता हूं, आई फ्लेक्स द एल्बो जॉइंट, आई एम स्ट्रेचिंग द ट्राइसेप्स मसल। मैं बाइसेप को नहीं कर रहा, मैं ट्राइसेप्स को स्ट्रेच कर रहा हूं। एंड इफ आई प्लेस माई हैंड ओवर द ट्राइसेप्स, आई कैन फील दैट व्हेन आई एम डूइंग दिस द मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस मसल इज रेजिस्टिंग दिस एक्शन, एंड इफ आई ट्राई टू ओपन इट पैसिवली, then again the biceps is resisting this action. So when I'm stretching the muscle, muscle is responding by contraction. That is the stretch reflex. चाहे मैं ऐसे करूंगा चाहे ऐसे करूंगा, दोनों ही तरफ पैसिवली कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। ये पैसिव मूवमेंट मैं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे मैं करूंगा तो ये पैसिव एक्शन कहलाएगा, मैं खुद करूंगा तो ये एक्टिव एक्शन कहलाएगा। दो चीजें हो गई, पैसिव एंड एक्टिव। नाउ विदाउट मैं ये कुछ नहीं कर रहा, आई टेक ए हैमर एंड टेप ओवर इट, मैं टेंडन पे टेप करता हूं, इसकी हम आगे डिटेल में बात करें। हो क्या रहा है, टेंडन पे टेप करता हूं, टेंडन इसको मसल को नीचे ले जाता है, मतलब मसल खिंच रही है इससे। टेंडन में भी रिसेप्टर मौजूद हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। मैं टेंडन पे मार रहा हूं, मसल खिंच रही है, मसल खिंच में एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर दे आर स्ट्रेच्ड, फॉलो माय पॉइंट। Extrafusal muscle fibers are stretched. Muscle spindles are located within the extrafusal muscle fibers in parallel. They are in parallel. उसके साथ पैरेलल में लगे हुए हैं मसल स्पिंडल। तो जब मैं इन फाइबर्स को स्ट्रेच करूंगा तो मसल स्पिंडल को क्या होगा? So if I stretch, these are extrafusal muscle fiber, और इसके अंदर मसल स्पिंडल मौजूद है ना, एंड दिस इज अरेंज्ड इन पैरेलल, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अरेंज्ड इन पैरेलल विद द स्केलेटल मसल फाइबर। सो इफ आई स्ट्रेच दीज मसल फाइबर, देन दिस मसल स्पिंडल विल आल्सो गेट स्ट्रेच्ड अलोंग विद इट। ये साथ में स्ट्रेच होगा क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है ये। तो इन फाइबर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच होगा। इसके स्ट्रेच होने का मतलब है दैट दिस विल गेट स्ट्रेच्ड, ओके। मसल स्पिंडल में फाइबर्स अंडर स्ट्रेच होंगे, इट मीन द सेंट्रल सेंसरी पोर्शन विल आल्सो गेट स्ट्रेच साइमल्टेनियसली। इट मीन्स 1A fiber will get stimulated because of the stretch. The information will go to the central nervous system. अल्फा मोटर न्यूरॉन से सिनेप्स करेगा ये और रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगी और आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ऐसा जरूरी है क्या? मसल को आपने स्ट्रेच किया और ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई। अब इसमें गामा मोटर न्यूरॉन का रोल कहां से आ गया? व्हाट इज गामा मोटर न्यूरॉन डूइंग? So if you see that if this muscle spindle is stretched, अब आपने ये मसल को स्ट्रेच किया, मसल स्पिंडल स्ट्रेच हुआ,
और मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन होते ही स्पिंडल पे से स्ट्रेच खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्शन होते ही स्पिंडल पे से स्ट्रेच खत्म हो गई। स्ट्रेच खत्म होते ही यहां से जो इंफॉर्मेशन जा रही थी मसल को नहीं जा रही, मसल रिलैक्स कर जाएगी फॉरन इमीडिएटली, मसल विल रिलैक्स इमीडिएटली, बट वी डू नॉट अलाउ दैट टू हैपन। अगर मैं को वॉलंटरी काम कर रहा हूं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट रखना है और ये मसल स्पिंडल रिलैक्स हो गया तो मसल वापस रिलैक्स हो जाएगी। इट इज नॉट बी पॉसिबल टू डू द वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। देयर कम्स द रोल ऑफ द गामा मोटर न्यूरॉन। So what is the role of the gamma motor neuron then? हमने रिफ्लेक्स देख ली, मसल को स्ट्रेच किया, मसल रेस्पॉन्ड कर रही है, पाथवे वी ऑलरेडी सेम। ओके, दैट इज सिंपल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्पिंडल्स, मसल स्पिंडल्स आर लोकेटेड इन पैरेलल विद द स्केलेटल मसल फाइबर, ये याद रखना जरूरी है। नाउ व्हेनेवर एनी वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी इज डिजायर्ड, ये तो हम रिफ्लेक्स की बात कर रहे थे। You see, a certain amount of tone in the muscle is always required. अगर मसल टोनलेस तो हम वॉलंटरी काम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एंड इफ यू कॉन्ट्रैक्ट द मसल, द टेंशन ऑन द स्पिंडल गोज, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, मसल छोटी हो गई तो स्पिंडल पे जो टेंशन पड़ रहा था वो खत्म हो गया, वहां से जो इंफॉर्मेशन जा रही थी वो भी खत्म हो गई, मसल रिलैक्स हो जाएगी, मसल टोनलेस हो जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे। So that tone needs to be maintained continuously in the skeletal muscle so that voluntary work can be performed. There comes the role of the gamma motor neuron. So whenever in the body, if the brain desires to carry some voluntary motor activity, then the brain excites the alpha motor neurons of the spinal cord and the activity goes to the extraphyseal muscle fiber. At the same time, the brain also activates the gamma motor neuron system pathway. So there is always an alpha gamma co-activation in the central nervous system. Alpha gamma co-activation साथ साथ होता है, अल्फा एक्टिवेट हुआ साथ के साथ गामा मोटर न्यूरॉन भी एक्टिवेट होगा। उससे फायदा क्या होगा कि अगर आप गामा मोटर न्यूरॉन को साथ के साथ एक्टिवेट करते हैं, then when the skeletal muscle which is outside this is contracting, then there is a stretch on this, it is causing reflex action simultaneously to prevent the unloading of this spindle. The extraphyseal muscle fiber, intraphyseal muscle fibers contract simultaneously. तो इस पे जो मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से लोड कम हो रहा था, उस लोड को कम नहीं होने दिया जा रहा। These intraphyseal muscle fibers contract because of the gamma activation and they causes stretch over the central portion continuously. So the stretch reflex is actually continuously activated. इसको deactivate नहीं होने दिया जाता। So muscle remains under contractile state as long as we desire, despite the presence of the muscle spindle. तो muscle spindle को continuously activate रखने के लिए, to keep the sensitivity of the muscle spindle continuously active, gamma motor neurons are activated, which causes contraction of the intraphyseal muscle fiber simultaneously along with the extraphyseal muscle fibers contraction, and that results into continuous maintenance of tone in the skeletal muscle, जिसकी हम आगे बात करेंगे. So that is the function of the gamma motor neurons. So dynamic gamma motor neurons modify the activity of the nuclear back fibers, while the static gamma motor neurons modify the activity of the nuclear chain fibers. So gamma motor neuron activation is absolutely essential for the voluntary motor activity. Okay.